From Aradhya classes, I am Suresh Pandey. Friends, now we are going to see chapter number 15, Economic Development. Friends, we should say that every person's morning in the world, every person's morning begins in different way. हर इंसान की सुबह एक अलग तरह से होती है वर्ल्ड में, दुनिया में. Many had life full of material pleasure. बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ बहुत खुशियों से भरी होती है. But maximum are struggling for existence. But maximum people are struggling for existence. लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपने जीवन को चलाने के लिए स्ट्रगल करते होते हैं. फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? टुडे in today's world, every country is trying to get development. Whether any country of the world is trying to get the development. But you know friends, what is meant by development? The development is not confined to economic development only. What is that? The development is not confined ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि किसी भी देश का अगर सिर्फ आर्थिक विकास होता है तो डेवलपमेंट हो गया? नो, इट्स नॉट दैट. द डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. सिर्फ किसी भी देश का आर्थिक विकास हो जाना वही डेवलपमेंट नहीं है. देन व्हाट इज डेवलपमेंट? इट इज प्रोसेस. Development is process of social changes having many phases. Development, विकास एक सामाजिक परिवर्तन है of having many phases. It has many phases there. But here friends, we will have to understand the term economic development. Economic development means, what is the mean there? Economic development means, economic development का मतलब होता है दोस्तों, when there is constant increase, when there is constant increase in income of country. What's that? When there is constant increase in income of country. किसी भी देश की इनकम में, आवक में कंस्टेंट, लगातार बढ़ोतरी होती है, देश की आवक बढ़ती है. When there is constant increase in income of country, when there is increase in per capita income of country, किसी भी देश की per capita income. Friends, what's per capita income? Per capita income means listen. The income of country is called national income. The income of country is called national income. And the national income is divided by total population. When national income is divided by total population, the per capita income is obtained. Is that clear? भी किसी भी देश की जो आवक होती है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आवक. और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आवक को जब पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो मिलता है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, व्यक्तिगत आवक. फ्रेंड्स, द टर्म वाज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट and we were discussing about that. When there is constant increase in income of country and there is
increase in per capita income of country. There is change in lifestyle of people or standard of living of people. लोगों के लाइफस्टाइल में, जीवन में बदलाव आवे या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके जीवन जीने के लेवल में कुछ परिवर्तन आता है. इट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दोस्तों एक बार जरा हम फिर से देखते हैं. What is economic development there? When there is constant increase in income of country, when there is increase in per capita income of country, when there is change in lifestyle of people or standard of living in people, it is known as economic development. उसको हम बोलेंगे आर्थिक विकास. दोस्तों, as we know that income of country is known as national income, and national income is divided by total population. The per capita income is of state. Friends, here the question is that एक प्रश्न हमारे पास आता है, how can we say that in India economic development is taking place? हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? What that? How can we say that economic development is taking place in India? Friends, let us see that. हम देखते जरा. How can we say that economic development is taking place in India? इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, अपने कैसे बोल सकते हैं? Friends, the same thing that what are they earlier said? आगे क्या बताया मैंने? When there is constant increase in income of country. जब किसी भी देश की इनकम में क्या होता है? Constant increase in income of country. किसी भी देश की इनकम में लगातार बढ़ना हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है. ठीक है. दूसरा, when there is increase in per capita income of country, increase in per capita income of country. ठीक है. From last some decades we notice that there is constant increase in income of country, in income of India. लगातार पिछले कुछ वर्षों से, कुछ डिकेड से we notice that in India there is constant increase in income. There is also increase in per capita income of India. इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी ऊंची आई है, बढ़ी है. And friends, after independence, there is improvement. For that, after independence there is improvement in facilities and services. In facilities and services, जो भी facilities और services हैं, in that there is improvement. उसके अंदर improvement आया है. Like after independence there is improvement in facilities and services, like availability of food grains. What friends? Availability of food grains. जो भी अनाज के बारे में इंडिया में आराम से अनाज मिल जाता है. Availability of food grains. Then shelter, education, then clothes, electricity, health services. These things have been improved. इन सब वस्तुओं में improvement हुआ है. Which things there?
Friends, there is improvement in the facilities and services like availability of food grains, shelter, education, clothes, electricity, health services, etc. So that we can say, in India, economic development is taking place. In India, economic development is taking place. We can say this. Why? For the cause of there is constant increase in income of India. There is increase in per capita income of India. And after independence, there is improvement in facilities and services like availability of food grains, shelter, education, clothes, electricity and health services. These are better in comparison of the past. पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है. So that we can say economic development is taking place in India. India में economic development हो रहा है. Friends, there is the new point. एक अगला नया point है. What is the difference between economic development and economic progress? अब economic development और economic progress के बीच में अंतर क्या है? What is the difference between economic development and economic progress? Earlier we having seen that the term economic development ये देखा आपने. दूसरा हमने क्या देखा? एक प्रश्न हमने भी डिस्कस किया कि हम कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ कैन we distinguish between economic development and economic progress. आप उसके अंदर कैसे डिस्टेंस कर सकते हो. फ्रेंड्स देखते जरा उसमें कैसे डिस्टेंस होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज. व्हाट दैट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हियर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. Economic development and economic progress. Friends, economic development is first stage. What that? Economic development is first stage and economic progress is stage after economic development. Economic development is first stage and economic progress is stage after economic development. Clear that? The first point. Secondly, friends, economic development is qualitative change. What that? Economic development is qualitative change. Clear that? Economic progress is quantitative change. What is that? Quantitative change. Economic development is qualitative change and economic progress is quantitative change. Friends, economic development की बात करें अपने को. When there is increase in agriculture production, क्या हुआ दोस्तों? When there is increase in agricultural production, agriculture production में थोड़ा increasement हुआ है, बढ़ा है. Due to implementation of new technology, due to implementation of new technology, नई टेक्नोलॉजी, new methods, नई टेक्नोलॉजी या नई मेथड को लाए हैं, है ना. हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब बढ़ा है. एंड सो दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज. और इससे क्या हुआ है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है. इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या हुआ दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आया? न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज,
These things have been implemented there, and so the production has been increased, so that there is economic development. But in economic progress there is different things. लेकिन इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें हम तो उसमें अलग है. उसमें क्या है दोस्तों? उसमें बात यह है इकोनॉमिक प्रोग्रेस कब होगा? When there is increase in agriculture production due to increase in agricultural land. कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है फ्रेंड्स, पर साथ में उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ में क्यों बढ़ा है? क्योंकि लैंड बढ़ गई है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ी है, इसके हिसाब से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है. दैट इज ओनली दैट फ्रेंड्स. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन income of, when there is increase in income of developing countries. what there? ये नया पॉइंट है फ्रेंड्स. डेवलपिंग कंट्रीज की इनकम बढ़ती है तो क्या हुआ? तो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, क्या हुआ दोस्तों? अगर डेवलप्ड कंट्री की इनकम बढ़ती है तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. इज दैट क्लियर? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब हो रहा है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस कब हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज and economic progress is quantitative change. Economic develop when there is increase in agriculture production, when there is increase in agriculture production due to implementation of new technology, new methods, hybrid seeds and irrigation facilities etc. ये सब बढ़ाया है तो और इनकम बढ़ी है, then it is economic development. But when there is increase in agriculture production due to increase in agricultural land, that is economic progress. Friends, when there is increase in income of developing countries, it is economic development. And when there is increase in income of developed country, it is economic progress. Friends, in this video we having seen 3 points of this chapter. Number 1, the term economic development. टर्म देखा हमने economic development. Second point हमने देखा how can we say that economic development is taking place in India. हम कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में economic development हो रहा है. Clear that? First one, term economic development. Second one, how can we say that economic development is taking place in India? And third one we having seen, और third one हमने देखा the difference between economic development and economic progress. Friends, in the next video we will discuss about the features of developing economy. What point? The features of developing economy, that we will discuss that. Up to then, thank you.